Hello students, in this video we'll learn 3-letter words and that is of sound E. So sound E is pronunciation wise we give the sound A. E की जो sound होती है वो होती है A. So pictures are given, we'll see the picture and then we'll write the letter. The first picture is B-E-D, bed. This is T-E-N, ten. So here N-E-T, net. So net is used to catch butterflies, fish. P-E-G, peg, khunti. It is used to hang clothes at home. This is L-E-G, leg, pair. Legs are used for walking. This is P-E-N, pen. Pen is used for writing. These are the pictures of man. M-E-N, men. This is H-E-N, hen. Hen gives us eggs. Now this is exercise 2 on the basis of sound of E. So here letters are unscrambled. We will put these letters in correct order. So this is B-E-T, bat. Bat होता है शर्त लगाना. B-E-G, B-E-G, bag. अनुरोध करना, किसी से प्रार्थना करना. That is called bag. So now next word is F-E-N, फैन. फैन होता है नीची दलदली भूमि. जैसे दलदल का एरिया होगा और वो थोड़ा नीचे होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, फैन. नेक्स्ट इज D-E-N, den, गुफा. सो लायन लिव्स इन den. दिस इज M-E-N, मैन, आदमी. जब काफी सारे आदमी होंगे देन वी यूज द वर्ड M-E-N, मैन. नेक्स्ट इज G-E-M, जेम, रत्न. सो जो अच्छे लोग होते हैं उनको हम जेम्स कहते हैं. और नॉर्मली अगर हम थिंग्स की बात करें तो हीरे जवाहरात जो होता है उन्हें हम जेम कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज योर G-E-T, गेट. गेट का मतलब लिया. जब हम किसी से कोई चीज ले लेते हैं देन वी यूज द वर्ड G-E-T, गेट. नेक्स्ट J-E-T, जेट. जेट प्लेन आप लोगों ने देखा होगा, जेट प्लेन. नेक्स्ट W-E-T, wet. Wet means गीला. So whenever there is rain, if we go out, we become wet. हम गीले हो जाते हैं. Next is S-E-T, set. Set means अस्त होना. So सूरज जब अस्त होता है then we use the word set. So this was very easy exercise, students. 2 exercise we have done in this. I hope you have liked it. So definitely let me know through your comments in comment box. Thank you.